हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम अमृत राज और मैं आपका बायोलॉजी का मास्टर टीचर यहाँ पे वेदांतु में। गाइज, आप लोगों ने हमारी सीरीज देखी उमंग, और उसमें आज आपको मैं क्रैश कोर्स कराने वाला हूं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। अब वो इसे क्रैश कोर्स का मतलब क्या है बेटा? क्रैश कोर्स का मतलब आज हम माइंड मैप्स यूज करेंगे ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो कंसोलिडेट हो पाए। अब कहोगे सर कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? बेटा कंसोलिडेशन का मतलब है कि जितना भी आपने पढ़ा है उसको कंसाइज तरीके से आप याद कर पाओ, और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है माइंड मैप्स करना, है ना गाइस? तो आज के क्रैश कोर्स में हम पूरा चैप्टर माइंड मैप्स के थ्रू करेंगे, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए, और बाय द एंड जब तक आपके एग्जाम्स आए आप प्रो लेवल पे बन जाओ। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको इतनी बार उस चीजों को रिवाइज करा दें जितना चैप्टर हमने कराया है कि आपको एग्जाम में जाने से पहले पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है गाइस, दैट विल बी माय एम। मेरा एम ये रहेगा कि आपको कम से कम स्ट्रेस हो एग्जाम से पहले, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को लेके। ठीक है गाइस, तो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आपको मैंने बताया, आज हम नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे क्रैश कोर्स में। ठीक है, आप लोगों के मिड टर्म आ रहे हैं तो क्रैश कोर्स कराते हैं, तो हम नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो हमने पढ़ा था, जब मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराया था गाइस उमंग में, तब हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग माय बॉडी। मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं अपने हाथ हिला रहा हूं, है ना? Why am I able to do all these things? Because of my control and coordination system, है ना बच्चे? तो there are two processes by which my body is controlled. There are two systems by which my body is controlled. दो सिस्टम है गाइस, एक तो है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा होता है बेटा? एक तो होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है बेटा? जो केमिकल वाला सिस्टम होता है। ठीक है, केमिकल मतलब इसमें क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स मतलब केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। नर्वस सिस्टम में कौन से वाले होते हैं गाइस? यहां पे इलेक्ट्रिकल मैसेजेस होते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल मैसेंजर्स होते हैं, और एंडोक्राइन में केमिकल। तो ये दो तरह की चीजें होती हैं। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये दो सिस्टम है बहुत सिंपल से, जो मेरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल करते हैं कि मैं कितना ग्रो करूंगा, मेरी हाइट क्या होगी। ये कंट्रोल करते हैं कि मैं कब सोऊंगा, ये तक कंट्रोल करते हैं गाइस। ये कंट्रोल करते हैं कि मेरे जो कैरेक्टर्स हैं, मेरी मेल कैरेक्टर्स की फेशियल हेयर, बॉडी हेयर मेल में ज्यादा होते हैं तो ये होंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है? एंडोक्राइन सिस्टम डिसाइड करता है। नर्वस सिस्टम क्या डिसाइड करता है बेटा? कि मैं कैसे मूव करूंगा, मैं कैसे रेस्पॉन्ड करूंगा। रेस्पॉन्ड किस चीज को? अगर कोई मेरे को मतलब डॉग दिख गया, ठीक है, कोई डॉग दिख गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे पता है वो डॉग मुझे काटने वाला है, तो मुझे क्या करना चाहिए गाइस? मुझे वापस डॉग को काटना चाहिए? नो, मुझे भागना चाहिए वहां से। कूल। तो ये मुझे कौन बताएगा? ये मेरा नर्वस सिस्टम बताएगा। वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजेगा कि बेटा वहां से भागो, रन फ्रॉम देयर, है ना? तो दैट इज बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। उसमें गाइस एंडोक्राइन सिस्टम भी मतलब हेल्प करता है। जैसे जब मैं कुत्ते को देख के भागता हूं तो उसमें मेरा एंडोक्राइन सिस्टम भी हेल्प करता है। तो हम ये सब चीजें देखेंगे आज। ठीक है गाइस, तो तो जब मैं नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं बच्चों, when I'm talking about nervous system, है ना, तो फर्स्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम वी कैन से जनरली, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो देखते हैं क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गाइस बस दो चीजें होती हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरी चीज होती है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जब मैं नर्वस सिस्टम बात कर रहा हूं, नर्वस सिस्टम किस तरह के गाइस? दो तरह के, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं गाइस? ब्रेन होता है और मेरा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, बस मेरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वेरी गुड सर। अब जो मेरा ब्रेन है, इसको मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। किस तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है बेटा? पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। ये तीन पार्ट्स हैं मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। वेरी गुड गाइस। सेंट्रल नर्वस के जो तीन पार्ट है, इसका फंक्शन क्या होता है गाइस? वेरी इंपॉर्टेंट। फोर ब्रेन किस चीज में हेल्प करता है? मेरी थिंकिंग में, मैं क्या सोच रहा हूं।
मेरे को सेंसिंग में हेल्प करता है। सेंसिंग मतलब मैंने ये पेन पकड़ रखा है तो मुझे बता रहा है कि मेरे हाथ में ये पेन है, सेंसिंग में। मेमोरी में, मेरे को याद करने में हेल्प करता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंपल्सेस में, मतलब अगर आप लोग कमेंट लिखोगे तो मैं पढ़ूंगा, उसके बारे में मैं एक फीलिंग जनरेट करूंगा, उसमें मेरे को हेल्प करता है। अगर कोई मेरे को कुछ गलत चीज बताता है, समवन इज अब्यूजिंग मी, तो आई विल इंटरप्रेट, उसको मैं समझूंगा एंड आई विल रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। तो उसमें मेरी कौन सी चीज, कौन सा पार्ट ऑफ द मेरे ब्रेन हेल्प करता है? फोर ब्रेन हेल्प करता है। जैसे कि आई वाज टेलिंग यू अबाउट द डॉग, जो डॉग मेरे को काटने वाला है, तो मैं ये देखूंगा और मैं एनालाइज करूंगा, ये कहां पे रहेगा, मेरे फोर ब्रेन में ये सारा इंफॉर्मेशन जाएगा और अकॉर्डिंगली मैं रिएक्ट करूंगा। मिड ब्रेन में क्या होता है गाइस? रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, रिफ्लेक्स एक्शन भी आई और नेक के रिफ्लेक्स एक्शन को ये कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन गाइस बॉडी पोस्चर, सॉरी बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करता है। पहली बात तो हाइंड ब्रेन सेरिबेलम जिसका पार्ट होता है ना, हमने गाइस ये चीजें डिटेल में करी है ब्रेन स्ट्रक्चर में। अगर आप उमंग की सीरीज में देखोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये मैंने डिटेल में करा है, अभी मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूं आप लोगों की, ठीक है। सलाइवेशन में हेल्प करता है ना, ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है गाइस। पॉन्स जो होता है वो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, वो हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करता है। देन एज आई टोल्ड यू बैलेंसिंग में सेरिबेलम हेल्प करता है ना गाइस। मेड्यूला क्या करता है? सिग्नल्स को कोऑर्डिनेट करता है, उसमें भी रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, प्लस इट हेल्प्स इन यू नो सेंडिंग द सिग्नल टू माय ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। गाइस जस्ट आपको ये ध्यान रखना है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन जो होते हैं, हमारी ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, और उनके फंक्शन कंसाइजली थोड़ा बहुत याद करने हैं, है ना। अमेजिंग गाइस। दूसरा पार्ट मैंने क्या बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का गाइस? स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा पार्ट क्या है हमारा? स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है गाइस? ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है और इंपल्स को कन्वे करता है मेरे ब्रेन की तरफ। गाइस दिस इज माय ब्रेन, ये मेरा ब्रेन है मान लो, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है टुवर्ड्स द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड में से बहुत सारी नर्व्स आ रही होती हैं, सिमिलरली ब्रेन से भी बहुत सारी नर्व्स आ रही होती हैं, लाइक दिस, राइट गाइस। सो स्पाइनल कॉर्ड हेल्प्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। अभी रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बेटा? देखो 2-3 कीवर्ड्स हैं, मैं अपनी हर क्लास में बताता हूं गाइस, आपको इसको रट्टा नहीं मारना है, यू जस्ट नीड टू लर्न द कीवर्ड्स। अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू द कीवर्ड्स। What are the keywords? Central nervous system सुन रहे, you should know the keyword brain and spinal cord. You should know brain में there are four brain, mid brain and hind brain. That's it. That's the keywords. Are you understand guys? This is a crash course. Okay, I have taught this properly. ये सब चीजें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं, है ना। Do watch the control and coordination वाला lectures in Umang, है ना guys? Do watch it over there in the Umang वाला session. Cool. Are you able to understand guys? है ना? Here I am giving you the keywords. Central nervous system, brain, which is your forebrain, midbrain, hindbrain. Now spinal cord. Spinal cord contains what guys? It helps in reflex action. Now what's the reflex action guys? It is immediate involuntary response. Immediate मतलब एकदम sudden and involuntary. Involuntary मतलब I'm not thinking, मतलब सोच के नहीं, अपने आप हो जाता है वो, है ना। And what helps in that? Spinal cord helps in that. वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, रिफ्लेक्स एक्शन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, है ना। और उसमें भी ये जो पाथवे है, ये पाथवे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू जस्ट नीड टू राइट द ब्लॉक डायग्राम गाइस। स्टिमुलस इज अप्लाइड। स्टिमुलस कहां लगता है? रिसेप्टर में। फॉर एग्जांपल माय हैंड इज अ रिसेप्टर, तो स्टिमुलस लगा, देन इट इज टेकन टू द स्पाइनल कॉर्ड बाय सेंसरी ऑर्गन। गाइस जस्ट ब्लॉक डायग्राम बनाओ, इसका कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, ब्लॉक डायग्राम बनाओ। स्टिमुलस बनाओ, फिर रिसेप्टर बनाओ, ब्लॉक बनाओ, सेंसरी न्यूरॉन, फिर यहां पे ये कुछ नहीं बनाना, बस एक ब्लॉक डाल के यहां पे लिख दो स्पाइनल कॉर्ड। ब्लॉक डाल के यहां पे लिख दो स्पाइनल कॉर्ड। आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड इट, अगर आपने मेरा सेशन देखा होगा मैंने आपको बताया होगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं बनाना, बस ब्लॉक बना के लिख दो स्पाइनल कॉर्ड, टीचर समझ जाएंगे, है ना गाइस। सो मैंने कुछ टच करा, ये यहां से स्टिमुलस हुआ, टच मतलब स्टिमुलस, फिर यहां पे क्या है? रिसेप्टर। ये रिसेप्टर सिग्नल मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगा। तो जो नर्व ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को लेके जा रही है, दिस इज सेंसरी न्यूरॉन। कौन है बेटा? सेंसरी न्यूरॉन टेक्स सिग्नल टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड ने देखा, स्पाइनल कॉर्ड सेंड्स अ
message or sends an action, remove your hand. So that is bringing over here. It goes to spinal cord. Spinal cord say who's bringing the signal back to the organ. यहां से चला गया, सेंसरी लेके गया. Who's bringing it back? The motor neuron. एक और यहां पे ब्लॉक डाला, motor neuron. And where is it bringing the information to? It is bringing the information to the effector. Effector मतलब जो कि action लेगा. I will remove my hand. This is the effector. It was a receptor. It is also the effector also. It is gonna act on it. तो ये effector आ गया. और फिर effector क्या करेगा? अब ये respond करेगा. Response is removing the hand. So hence it will respond. Guys, whenever a reflex action, question will come, what is reflex action? 3 marks. So you should write, it is sudden, immediate, involuntary response, है ना, to a stimuli. An example लिख लो, on touching a hot plate. Then guys, if you don't draw this diagram, you won't get marks. This is very, very, very important diagram. Are we good? Did you understand, guys? Hit the like button if you understood this reflex action. Yes guys, hit the like button if you understood this. Yes guys, and subscribe to the channel, guys. Please subscribe to our channel. Help us grow. Tell your friends to watch these lectures so that they are also benefited from this. है ना guys? Very good. समझ आ गया हमें. थोड़ा आगे चलते हैं. Moving forward, this one. अब nervous system, I was telling you. I told you 2 types. Central nervous system and next is guys peripheral nervous system. Now the peripheral nervous system, na beta, as I told you, the brain is there. The brain is there. Now beta, brain means there are many wires coming out. What is coming out? Wires are coming out from the brain like this. There are 12 pairs of wires coming out of my brain and 31 pair of wires coming out from my spinal cord. What do I call them as? They are called as guys cranial nerves. And we have spinal. What do we have, beta? Cranial nerves and spinal nerves. How many cranial nerves? 12 pairs. And we have 31 pairs over here. Are we good? Hello, beta. So, what is happening? There are wires coming out of my brain and wires coming out of my spinal cord. What are they doing? They are taking signals to my organs or bringing the signals from my organ to brain and spinal cord. Are you able to understand? You can consider my body as a system which has wires going all over. What is the headquarter? Brain and the spinal cord. The signal from all my organ is going to the spinal cord and the brain, and signals are sent also by the brain and the spinal cord to all my organs. है ना बच्चे, समझ आ रही है? Very good. Now this peripheral nervous system we have divided into 2 parts. One, somatic nerves. Somatic nerves means which I can control. Somatic means which I can control. For example, my arms I can control, my eyes ko I can control, my neck ko I can control. है ना? So all these I can control. As I was telling you, 12 pair of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves are there. है ना बच्चे? है ना? Nerves means consisting of neurons, a tissue made up of neurons. So what are the neurons? Sensory. Sensory means these will take information to the brain. The ones which are taking information to the brain. Motor means, beta, motor means the ones which are bringing information away from the brain. The ones which are bringing information away from the brain are called as motor. Sensory means towards, motor means away. है ना? Very good. Now there's association also. Association means linking the information. Linking means there will be neurons over here also. है ना? These are association. Basically what are they doing? They link the information based on our experiences. For example, I have been bitten by the dog. Dog ने मेरे को काटा हुआ है. तो I will stay away from the dog. है ना? I won't. The association neuron will say, this dog has bitten you already. Stay away from it. Run from it. है ना? Don't stay close to it. Right, guys? This will help me. Right? Very good. Now the other thing, guys, autonomic nerve system. For example, some nerves are going out from brain and spinal cord which go to involuntary organs. So involuntary organ means, guys, which I cannot control. For example, there is nerve coming to my eyes which control diameter of my pupil.
which controls diameter of my pupil. Can I control diameter of my pupil? No, it is automatically controlled. है ना बेटा? So that is autonomous nervous system. Example, eyes का pupil, है ना? Then salivary gland, salivation. Can I control the amount of saliva produced in my body? No. Right? So guys, autonomous nervous system is of two types, parasympathetic and sympathetic nervous system. Parasympathetic and sympathetic. Now what do you mean by this? What I mean by this is, guys, if something is increasing the diameter, the other one will decrease. If parasympathetic, decreases the diameter, constriction means decreases, parasympathetic or sympathetic will dilate. Parasympathetic decreases, sympathetic will dilate. So basically both of them are opposite in action to each other. They counter each other's action. If someone is increasing my salivation, the sympathetic will decrease it. Are you able to understand? Similarly, if digestion is increased in my body by parasympathetic, sympathetic will decrease, inhibit the digestion. Are you able to understand, guys? What did we do till now? We did nervous system. Nervous system we understood that there are two parts, central nervous system, peripheral nervous system. Central nervous system means only brain and spinal cord. Okay, ho gaya. Then we saw peripheral nervous system mein nerves are coming out of brain and spinal cord. Okay. Now this can be two types. These nerves can be of two types. One which I can control, the other which I cannot control. The one which I can control are called as somatic nerves. The ones which I am not controlling are called as autonomic nerves and come under autonomic nervous system. When I talk about autonomic nervous system, they are of two types, beta. What are the two types? Sympathetic and parasympathetic. What is the difference, sir? The difference is both of them act opposite to each other. If someone increases something, the other one will decrease it and bring it back to normal. This is what it is. Guys, clear? Nervous system is clear. Let's move to the second system which I told you helps us in controlling our body. Guys, again I am telling you, ये crash course है, ठीक है? ये crash course है. इसमें I am going to teach very fast for quick revision. This is meant for quick revision, guys, not for studies. Study करना है detail में. I have already made videos, है ना? Just put control and coordination. Go to Vedantu 9th and 10th channel, है ना? Put control and coordination. There I have explained each of these topics in a wonderful manner and very slowly. This is crash course, hence I am going fast. Very good, guys. As I was telling you, the other system is beta endocrine system. What do you mean by endocrine system, sir? Endocrine system, beta, endocrine system means the system which is based on hormones. What are hormones, beta? Hormones are chemical messengers. Hormones are chemical messengers. Very good, yaar. है ना? Means they carry messages in my body through chemicals. Very good. Now there are plants may also there are hormones present. Plants so they don't have brain and spinal cord like us. How do they control their body? They control their body through hormones called as phytohormones. The plant hormones are called as phytohormones. The plant hormones are called as, guys, phytohormones. Are we good till here? Yes? Yes, guys? Very good. है ना? So now plant phytohormones can be of two types, guys. They can be growth promoters or they can be growth inhibitors. They can be growth promoters or growth inhibitors. Growth promoters, example, guys, auxin, cytokinin, gibberellins. Right, these are what? These are growth promoters. We also have, guys, growth inhibitors. Example, ABA, also known as abscisic acid. It is also known as, guys, stress hormone. Very important. It's also known as stress hormone. Then we also have ethylene. Guys, very important. Okay, a question had come from this in the last
एग्जाम, मतलब 2019 के एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन हैड कम डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी, ओके, सो डू रीड इट, है ना बेटा। सो एज यू कैन सी, ऑक्सिन हेल्प्स इन सेल डिविजन, जिबरेलिन्स जर्मिनेशन ऑफ सीड स्प्राउटिंग ऑफ द बर्ड, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ, एज आई टोल्ड यू इट्स अ इनहिबिटर, इथाइलिन अगेन inhibits root growth, helps in ripening, cytokinin guys stimulates cell division, it helps in cell division, very good. So phytohormones तो हो गया. Now guys, humans also produce hormones. Now what do they do? For example guys, the most important one is pituitary. Guys, what will come in the exam is they will say the gland का name, they will ask what is the hormone produced by it and what is the function, or they will give the hormone's name and ask which gland produces it and what is the function of the hormone. So it's very important. There are 4-6 glands and hormones. Remember them guys very easily. I'll just explain it to you. Pituitary is also called as master gland, है ना? It produces hormone called as growth hormone. It also produces other hormone, but growth hormone is given in your book, है ना बेटा? So pituitary के बारे में we should know. Why is it called as master gland? Because it controls other glands production also. Master means what? It controls others. Like your master teachers are very good, they don't control you, but yeah, this master pituitary controls other glands, hence it is called as master gland. Right guys, moving forward, hypothalamus guys controls hormones from the pituitary. Basically hypothalamus controls pituitary, so it should be a master of master glands, but we don't call it as, but we just say that hypothalamus controls pituitary. Then guys, you would have heard of thyroid gland, है ना? Thyroid gland, it produces hormone called as thyroxine. Very easy, है ना? Name say we can make out. What does it do? Its function guys, increases the metabolism of the body. What does it do? It increases the metabolism of the body. Moving forward guys, adrenal glands are present on the top of the kidney guys, very important, you should know the location. Thyroid is present where? Neck. Adrenal gland on the top of the kidney. It produces a hormone called as adrenaline. What does it produce? Adrenaline. Guys, I told you I saw a dog, I have to run. So adrenaline will be produced in my body to provide me energy. I have to understand what is adrenaline doing. Adrenaline helps me to run. The hormone produced in my body when I see a dog is adrenaline. Obviously my brain and spinal cord are sending signal, but at the same time endocrine system will also function. Can you see guys how complex we are? Nervous system भी चल रहा है, endocrine system भी चल रहा है, heart भी चल रहा है, lungs भी चल रहा है, kidney भी चल रही है ना? We are so complex, है ना? तो when I see a dog, many systems are simultaneously working, बेटा, है ना? तो both the system will work. So adrenaline is also called as fight or flight hormone. Fight means when you're gonna fight with someone, right? What hormone is produced? Adrenaline is produced. When you're gonna run from somewhere, flight means run. Flight means उड़ना नहीं बेटा, means running from somewhere. What is produced? Adrenaline is produced. How many of you see Dragon Ball Z? Have you seen Dragon Ball Z? Goku, he does something like this, है ना? Suddenly his hair and all starts, and he starts glowing, energy starts radiating. So it is like that. Radiation is because of adrenaline. Have you felt energy when you're playing, right? When you're playing football, suddenly you feel gush of energy. Suddenly you feel lots and lots of energy coming inside you. That is adrenaline, guys. And so Goku would be feeling lots of adrenaline. I don't know. People who see Dragon Ball Z would understand. Others, I don't know. Yeah, do watch Dragon Ball. It's a good cartoon. Huh? So yeah, moving forward, guys. Pancreas. Now pancreas are present over there in the digestive system, beta, है ना? So what do they produce? They produce hormone insulin and glucagon. They produce the hormone insulin and glucagon. Very good, guys. What's the function? The insulin and glucagon control the blood glucose level. They control the blood glucose level. Talking about, guys, testis in the male. Testis in the male. What's the function? Testis produces sperms and it also produces hormones called as testosterone, guys. Testosterone. What is the function of testosterone, guys? Male characters. For example, I have more facial hair. I have more muscular development. है ना? Men have more muscles than female. है ना? Why? Because of testosterone. More facial hair. See, more facial hair because of testosterone.
Talking about ovaries, guys, ovaries produce progesterone and estrogen. Progesterone and estrogen. What are they responsible for? They are responsible for female characters. What do you mean by female characters, beta? Female character means less facial hair, less muscular development as compared to men, higher hip development because they have to bear the baby, right? Baby develops inside the mother's body, so they need more hip coverage, and high pitch of voice. Women have high pitch of voice. So all this is because of progesterone and estrogen. Right, guys? Shall we revise it once more? What did we do? We first saw that my body is controlled by two things, nervous system and endocrine system. Let us study the nervous system first. Nervous system mein we saw central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system mein we had brain and spinal cord. Very good. Brain has three parts: forebrain, midbrain, hindbrain. Spinal cord helps in reflex action, and the diagram is very important. Very good. Then we saw peripheral nervous system. We saw it is of two types: one which can be controlled, other one which cannot be controlled. The one which can be controlled is somatic. The one which cannot be controlled is guys, autonomous. Autonomous is further of two types: sympathetic and parasympathetic. Sympathetic and parasympathetic are opposite in function to each other. If one increases, other one will decrease the function. I gave you examples also. Very good. Then we move to the second system, guys. Endocrine system. What is endocrine system? Beta, hormones wala system. Hormones matlab chemical messengers are involved. Very good. Plants mein hormones are called as phytohormones. They are of two types: inhibitors and growth promoters. Growth inhibitors, growth promoters. Growth promoter, as the name says, they will promote the growth. Growth inhibitor, they will restrict the growth. Very good. Promoters are auxin, cytokinin and gibberellins. Growth inhibitors are, yes guys, tell me the name. ABA and ethylene. Guys, hit the like button if you are understanding, so that I can understand कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि है ना, my efforts are getting converted or not. Very good. Then humans में I told you कि pituitary is called as the master gland. Where is it present? Brain में. Why master gland? Because it controls the functions of the other glands. है ना? So that is pituitary for us. It produces the hormone, growth hormone, which is responsible for my height. Some people remain shorter in height because of growth hormone is less in them. Right, guys? Right, growth hormone is less in them. Moving forward, then I thought hypothalamus. Hypothalamus is also present in the brain. It controls the pituitary. Very good. Then we saw thyroid gland. It produces hormone thyroxine, which is responsible for metabolism of the body. What do you mean by metabolism? Usage of carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. How fast do I use them? Who decides that? Thyroxine helps in deciding the rate of metabolism. Very good. Then we saw adrenaline gland above the kidney. It produces adrenaline. Adrenaline is a fight or a flight hormone. Again, what does it do? Guys, it is responsible for emergency situation. Emergency means, as I told you, dog. See, today dog, our friend dog has come many times. Emergency situation mein adrenaline is produced. Very good. Then we saw pancreas, है ना, digestive system में produces insulin and glucagon, which helps in, yes guys, insulin and glucagon helps in what? Maintaining body glucose. Very good, yaar. है ना? Testis, what does it do? It produces testosterone, responsible for male characters. Ovaries produce progesterone and estrogen, responsible for female character. Testis and ovaries also produce the male and the female gamete respectively. Right, guys? Hit the like button, guys. Subscribe to our channel if you have understood this. So, and if you want to learn these things in a proper manner, guys, go to the Umang series. I will try to provide the description mein link also. है ना? Do watch all those things. है ना? If you want to do the chapter in detail, I have covered it in the other videos. Just go to our Vedantu 9th and 10th channel. There will be a playlist available, guys. है ना? Do that. And yes, guys, thank you for attending the session. Hit the like button and do let me know, guys, did you like the session? है ना? आपको लगा, like, did you understand the fast version? I know I was very fast today, but yeah, did you understand it? It's for quick revision, guys, because your exams are coming. Do let me know कि आपको अच्छा लगा. Did you like the session? है ना? And show the love which you always keep doing. I really like when I read your comments, guys. It's really wonderful. So the love which you show to us, है ना, guys. So thanks a lot, guys. I feel privileged to be teaching you, and I'll see you in the next session, guys. Bye bye. Have a good evening. Bye.